हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये हम करेंगे विद ताबीर कार्डनी। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन विद मल्टीपल टर्म्स ईच इन्वॉल्विंग अ पावर ऑफ द वेरिएबल। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाइस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। सो फॉर एग्जांपल, in the equation 7x cubed minus 5x square plus 3x plus 8, the degree of the polynomial is 3, which is the highest power of x. और second equation में the highest power of x is 2, तो हम कहेंगे the degree of the polynomial is 2. Also we can see कि polynomials real numbers के भी हो सकते हैं और complex numbers के भी हो सकते हैं. Then अगर degree 2 है तो फिर we can call it a quadratic polynomial. अगर degree 3 है we can call it a cubic polynomial. And अगर degree 4 है so we can call it a biquadratic polynomial. Then we look at polynomial equations. So when we set a polynomial equal to 0, we get a polynomial equation. So if the polynomial has degree 2, then it's a quadratic equation. And the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b and c are constants and a is non-zero. A key distinction here is between identities and equations, जिसमें for example if ax square plus bx plus c equals to 0 holds true for all values of x, then it is an identity which only happens जब a is equals to b is equals to c equals to 0. However, quadratic equations सिर्फ specific values of x के लिए hold करती हैं, which we call the roots of the equation. और इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है विच इज़ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, या फिर वी कैन ऑल्सो फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन और बाय फैक्टराइजेशन.